Hey, hello everyone. Today I'm very excited to be talking to Nitin Jetwani, who is from Vadodara, Gujarat, and he comes from data analysis, science kind of background, unlike a lot of other fantasy players. तो चलिए शुरुआत करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं? हाँ तो थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। बाय द वे मैं हूँ नितिन जेठवानी। मैं पिछले 7-8 साल से हैदराबाद में हूँ एंड Okay. आई वर्क फॉर वन ऑफ द बिग फोर कंपनीज एज अ Hmm. कंसल्टेंट, एज अ सीनियर एनालिस्ट, एज एन डेटा साइंटिस्ट एंड Okay. how did it started with respect to fantasy sports and all. So it was my first job, and my manager and his friends were just looking around, and in every sutta break or any kind of break they would just go down and they will strategize that आज इसकी ये टॉस जीता है। और I guess that time वो टॉस भी half an hour before the lineups would come or something like that, के lineups release नहीं होते थे Dream 11 पे or something, so they would be much more focused on lineups कहाँ से आए and so on. So back then, 4-5 years back then, it was more about how to find information on who is playing or who is not. Okay. Right now, even if you have an information on who is playing and who is not, it has been extended towards that who will be playing better on a given day. So Absolutely. from A to Z, there is a lot of transformation, not only in terms of technology, but also in terms of information. Mm-hmm. So fantasy sports, फिर मैंने वहां से start किया. So during that time, I only started with one of the courses. So ये online system का मुझे पता ही नहीं चलता. There is all way around that learn online. I never got an heck of it. So because whenever you are learning anything new, imagine if I am learning any new language, let's say ABCD. अभी हमारे या हमारे बच्चों के जमाने में अगर उनको ABCD ऑनलाइन सिखाया जाएगा तो they won't be having an hold of it. So that's why I looked out for an offline class where I would work on the hands-on things and work with the people around and so on. So So in you actually 2000, did a so you actually did a class to understand fantasy cricket? no, not for. So it for 30% of it. So my first motivation towards this was, yes, fantasies, because of this. Because back then मेरे को आज की तारीख में ना पिछले 5 साल 7 साल में भी है ना, there is an lot of information on the internet, but I have been my decision maker of my own. So I have never gone through a medium of what I would say that कोई information मुझे दे रहा है और कोई टीम मुझे टेलीग्राम से दे रहा है, I am paying someone and all this shit. Because I think that no, he is also coming up with either an intuition or an information. Okay, if he would be, or he or she would be doing all these things, he would never give teams free with XYZ amount and so on. So मैं बोला okay, this is a new field, and that time I was also attracted towards algorithm trading. So I Okay. learned both of these things. So there is a big match of this algorithm trading and fantasy sports ka. So just like Okay. in fantasy sports, what you do is the outcome. It's very simple. The outcome is you need to know whether or not a player on a given day would perform or not. Similarly, in stock, what you do, you select the companies. It will let you know whether or not a company will go X or Y. ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा. It's just that Yeah. that is a similarity in this. But yes, the dynamics is really different when it comes to playing it hands on. So it started off with in 2015-16 जब मैंने बोला कि with when my manager was looking out for these things and so on. So my motivation was, yes, fantasy sports, but my motivation was not that I would use this fantasy sports with all in my research process and so on. So I learned these things, and by that time it was very helpful for me to marry all these certain things with my current work also. So I got a promotion at that time that I'm using all this thing. I came up with some shitty thing. You just in manager ko kya, you just
give some dashboards, give them some results, and they will be happy. So by the time I was good enough to understand that new technologies back then was Tableau and Microsoft Power BI and so on. So it was just a dashboard kind of a thing, and then I learned and I applied in my knowledge and got promoted. So that motivation, एक बार promotion हो गया, फिर मैं बोला अब क्या, मतलब पैसा ही लोगों को क्या है, फैंटेसी स्पोर्ट्स एक सपना ही है लोगों को बताने का कि ड्रीम 11 में एवरी डे देयर इज, whenever there is an I would say इंडिया की कोई मैचेस होती है, आईपीएल मैचेस होती है, there is lot of notifications coming that जीतो 1 करोड़ रुपए 40 रुपए डाल के. So it's all it's a bubble. So उस टाइम पे भी I know that this is it, either it is luck. So there it's a lot of, I would say there is a lot of debatable topic when it comes to whether there are not bots in this Dream 11 system. I'll come to that later, but the point is I thought that मेरे को कोई ऐसा sports लेना चाहिए जहाँ पे there is less variance. So by this time I understood all the concepts of statistics, variance, mean, all this. I can jot it down a lot of things, but the base are the mean, variance, and how much a player is performing better on a given day, where there is no just like in cricket. Let's say I'll give you a simple example. अगर आप क्रिकेट में लो कि विराट कोहली बैंगलोर में खेल रहा है तो आज उसने 50 मार दिया, तो 80% जनता सब उसको लेके आएगी. नेक्स्ट मैच में लोगों का ये इंट्यूशन रहेगा, जो फर्स्ट टाइमर से 85 वो विराट कोहली बोले कि आज भी 50 मारेगा, और लोग सब उसको लेके आएंगे, कैप्टन करेंगे ये सब. फिर एट द एंड ऑफ द डे ही वुड बी आइदर caught out at one, or let's say there would be a decision, external decision बहुत होते हैं, जैसे कि अगर किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया 2 पे 5 पे 6 पे. when it comes to other sports like baseball, basketball, there is no external event on this until unless there is an in-time game injury on a given day. So let's say in basketball mein except for the referee, they won't come up with something ke hey आपने कुछ just like you have in football. I'll simplify it for you. Because in football you have red card, yellow card. You don't get all this. You get fouls and you are discarded from that game for a current period of time, but that is very less. It's like वो सब fouls or technical fouls करने के जो भी होते हैं उनके criteria, it's very less. So I thought this is the only specific sports or which if I'll apply numbers, if I'll algorithms, this will give me good results. So from back there I started off with basketball. So I never played cricket first. Okay, you started with basketball fantasy. Yeah, so were you doing basketball fantasy in India or in the US? No. In India only. Okay. And I'll tell you the story. So it's very interesting story. So if you'll start with, let's say, basketball, I started. So basketball, there are also various leagues or various, I would say, few of the leagues which are not professional. So agar China ki aap le lo, ya for example, let me give you an example. Jahan India ki cricket ki team ki agar on an average T20 ka score agar 150 170 hota hai, aur women's ka let's say it's 110 120 when it comes to T20. Similarly, in basketball mein, there is a professional sports called NBA. Wahan pe there is a minimum ke once 110 or so total is around 200 210. And बाकी सब जो leagues में होती है उसका total मिला के it comes down to 150 and so when the pace of the game is very slow, so you won't be able to predict whether or not a player would give X number of results and so on. So that's why I chose कि NBA is a professional sport, and also NBA पे काफी लोगों ने in US I saw I had gone through a lot of research papers and saw that what is the algorithms they are using, what are the different techniques they are using, and how they are getting X number of results and so on. So वहां से मैंने I started off with NBA as a sport मुझे लेना है, and I'll apply all the logics and whatever I have learned in 1.5 2 years, and I'll apply it
all those things in 2017 or Into 18. cricket, into cricket No, not in fantasy. cricket. I'll still tell you I have not entered cricket yet, because I'll let you Okay. know the results also. देखो, आज अगर आप मेरे को 1 लाख रुपए दे रहे हो, ठीक है, आज अगर आप, let's say if I am an agent, or even if I am, let's say, financial advisor, what you do, you go to your financial advisor. Do you have money? You don't know how to grow your money, right? So what you do, you give it to your financial advisor or something, या broker, ये बोलते हैं कि मेरे को, वो आपको, इट विल कम अप विद स्कीम्स के देखो इतने 1 साल में मैं आपको 3%, 5% वो सब कर दूंगा. अब if I won't be able to deliver results, you won't be giving that money to me. You will be going to the other broker, irrespective of whatever I am doing, whatever technology I am using. As a client, you want results, right? And for me, it's to deliver results. So I'll come to the results which I'll be telling about, that how using all these algorithms or using all these technologies, I came up with some very good results. So So 2008. why don't you first tell us about your winnings, and then probably we can hear your Yeah, story yeah, on ki yeah, yeah. how it happened. So this will intrigue users more. Ki how much have you won? What has been your pattern of winning? And then you can tell the story of making of it. Yeah. So winnings, I would say it was somewhere around 6.5, 7 lakhs, and I have posted this on Twitter as well. Okay. Though at that time there would be many users where they would be, if you are planning to put up this video, they would come up with something abusive, because yes, I started a Prime channel, and just like all these channels, I was using this mode of Telegram Prime make teams do and so on. I So tried this this. was in what kind of span? You saying that you won like 6-7 lakh rupees. So in what It was in span of time? it was in 2018 से लेके 2019, somewhere around 6 months, 6.5 months. Okay. The entire NBA season. Okay. 2019. Okay. So this is not cricket fantasy. You're talking about NBA, right? Yeah. No, it's not about Okay. cricket. Okay. Because currently our users are more into cricket fantasy, so they'll appreciate more of what you have won and in cricket, because that is the kind of audience we are doing this interview for. I know. So when it comes to cricket, I can so I will say that cricket is, I still feel that it is very much based on luck, and it's less on skill right now, because of the matches, because of the competition in this off late. In I have seen in past 1.5 years, I have seen that a lot of competition is around this fantasy sports when it comes to cricket. So I have not aggressively played cricket and applied all those logic. However, when it comes to your specific fantasy, your platform, from your so lineup generator, I have used a lot of times. So I have never seen players, or I don't even know about players where I have played those matches, and I have won 2 or 3 grand leagues. It was T10 or T20. I did share it with one of your product managers also, my winnings. Yeah. So usme I applied the logic that so let's say if I'm generating 11 teams, so there you have a functionality of generating 11 teams. You didn't had this functionality of creating 11 grand league teams and so on. It came off late only. So it was I'm saying about 4, 5 months or 6 months back. You had just you go to your page, and you have an option to lock and select the players, or wahan se you can तो I was more looking into the leagues which would be having a grand league short price of 5 lakhs plus or so. तो वहां पे I realized के I would only target these matches. So it was into T10, T20, women matches and so on. तो आपके ऐप के द्वारा मैंने वहां से
So how would I generate? So मैं तो कोई मैच देखता हूँ नहीं, ठीक है. No one has a time to watch all these matches and so on, कि पिछले मैच में क्या हुआ and so on, and how is this, where are they play. एक बेसिक हो जाता है कि हाँ ये पिच की ये स्टेटस है, ये पिच ये one who will be batting first will be scoring this much or this would be the average, ये एक आइडिया रहता है. बट इतना सब कुछ फॉर अ मैनुअल एफर्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एंड बिल्ड टीम्स फॉर ईच एंड एवरी मैच. जो आप लोग कर रहे हो दैट इज बियॉन्ड आई वुड से व्हाट अ मैनुअल or a Absolutely. intervention can do. It's more about human nature cannot do all these things. For a human it's very difficult to create 11 teams for each matches again and again. अब एक हो जाता है ये 11 टीम्स क्रिएट करना, एक तो बात वो हो गई, वो एक रोबोट को दे दो, रोबोट भी कर लेगा. नाउ टू बिल्ड 11 विनिंग टीम्स इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो 11 विनिंग टीम्स की मैं जैसे बात करूं तो जहां पे मेरे को T10 T20 की मेरे को दिखता था कि ये 5 लाख 7 लाख वाले जो भी हाई विनिंग प्राइजेस है मैं वो टीम्स को क्रिएट करता था. सो आई वुड से देखो अगर 11 टीम्स में से certain set of players which are coming common in all 11 teams, ठीक है, मैं सबसे पहले उसको ड्रॉप करता था. लोग उसको सिलेक्ट करते थे, मैं उसको ड्रॉप करता था. रीजन बीइंग I would just go back and check what is the percentage selection of that player. So for an example, I'll give you an IPL का ले लो कि KL राहुल ले लो आप. KL राहुल every मैच में सेंचुरी कर रहा है, सेंचुरी नेक्स्ट मैच में भी सेंचुरी कर रहेगा है. और see if it's more about grand league teams और ये सब में तो it's less more about how well you pick the less selected players, less percentage selected players, then only you will be winning up higher. तो मैं सबसे पहले 11 प्लेयर्स को एक पीडीएफ में डालता हूँ और पीडीएफ से फिर मैं एक्सेल को कन्वर्ट करता हूँ. देन आई विल डू जस्ट चेक, क्योंकि मेरे लिए भी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं अगर 11 टीम ऐसी देखूं और स्क्रॉल करूं. मैं वो 11 टीम्स को, आपको पीडीएफ की एक फंक्शनलिटी है, वो पीडीएफ की फंक्शनलिटी से आई विल जस्ट कन्वर्ट दोस पीडीएफ में से 11 टीम्स. और आप लोग मेरे को कैप्टन वाइस कैप्टन भी वहां पे रिकमेंडेशन देते हो. सो मैं वो देखता हूँ कि कैप्टन वाइस कैप्टन ये लोग ने सिलेक्ट किए. सो फॉर एग्जांपल मैंने 22 टीम्स ले ली, यानी 11 टीम्स मैंने 2 बार क्रिएट किया और मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया. मैं 2 बार जब पीडीएफ में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ, मेरे पास टोटल अभी 22 टीम्स है. ऑन दिस 22 टीम्स मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे हर 22 टीम्स में कौन सा एक प्लेयर है जो आ ही रहा है कॉमन, मैं सबसे पहले उसको ड्रॉप करता हूँ. बिकॉज मैं उस ऑफकोर्स देयर इज एन एलिमेंट के वो हायर परसेंटेज सिलेक्शन है तो मैं उसको ड्रॉप करता हूँ. अगर लोअर परसेंटेज है तो आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग. इफ आई एम प्लेइंग विद अ लोअर परसेंटेज सिलेक्शन एंड इफ दैट प्लेयर इज giving me good returns, so definitely I'll be going around with a good position on that day. फिर वो जो आपका जो कैप्टन वाइस कैप्टन का जो रिकमेंडेशन है, so I would say they are 60 to 70% accurate. Because मेरे दिमाग में मुझे पता है कि मैं आज इसको कैप्टन डाल दूं, मैं इसको वाइस कैप्टन डाल दूं, बट आप मेरे को रिकमेंडेशन देते हो कि आप 11 टीम में मेरे को दिए तो मेरे पास 22 into 22 44 मेरे पास रिकमेंडेशन आ जाते हैं कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन है. अब आई वुड से इसके बाद भी अगर ये सब मेहनत अब मैं तो तभी करूं जब आईपीएल होगी. कोई 1-2 लाख के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा. बट व्हेन इट कम्स टू आईपीएल यू हैव हायर मोटिवेशन, बिग मोटिवेशन, सो यू विल डू ऑल दिस सेट ऑफ थिंग्स. तो आईपीएल में हर मैच में मैं कम से कम 20-30 पॉइंट से मैं रह जाता था इसी प्रोसेस से. आज से मैं 5 साल से आईपीएल खेल रहा हूँ, 6 साल से आईपीएल खेल रहा हूँ. मेरे तो ग्रैंड लीग में मेरा कभी 100-150 पॉइंट्स, 200-200 पॉइंट्स, जो ड्रीम टीम होती है उससे मैं 200-300 पॉइंट्स पीछे होता था. बट जब से मैंने आपका टूल यूज किया और मैंने मेरा अप्रोच डाला है उसमें मैं 20-30 पॉइंट्स रह जाता हूँ. और कहीं ना कहीं फिर फॉर एवरी मैच आई वुड से कि मेरा बैंडविड्थ होएगा फ्रॉम 20 to 100 पॉइंट्स, यानी फ्रॉम ड्रीम 11 पॉइंट्स, उससे ज्यादा मेरा गया ही नहीं है. For every match, for let's say even if it is 40 मैच, तो 20 पॉइंट से मेरा ड्रीम 11 रह जाता है, ड्रीम टीम रह जाता है, और 100 पॉइंट्स, द बैंडविड्थ इज 20 to 100. तो ये जो आप जो कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे देते हो मैं एक्सेल में डालता हूँ. अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या होता है क्रिकेट में, देयर इज नॉट लॉट ऑफ टाइम where you would do lot of analysis, and you have already done all these things, and that's why you are offering that particular thing to us.
See, what I can do best is either use my intuition, which is, I would say user should use their intuition, because see, आपको recommendation कंप्यूटर दे रहा है, ठीक है, आपको, आप जितना, अगर यही 11 टीम या 22 टीम या XYZ टीम, आप जितनी भी टीम अगर मैनुअली बनाने जाओगे, तो आपको कम से कम नहीं नहीं तो आधा घंटा तो लगेगा, अगर आप अपना अप्रोच निकाल रहे हो कि अच्छा मेरे को इसको लेना चाहिए, इसको अभी इसको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन करूँ कि ना करूँ. बट आई वुड से दिस इज इवन फॉर समवन हु इज वेरी advanced or intermediary in this particular fantasy, for him also to create 20 plus team, it's very difficult. But you guys give that particular team in less than a minute. अब सिर्फ डिफिकल्टी ये है कि वो 11 12 22 टीम को हमको मैनुअली बनाना पड़ता है. यूएस में ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट दैट यू नो you can directly enter this all this your lineups with, once you create this, and you can directly enter. So it saves your time and you can do all those things, but that is fine. You cannot complain on that. So इस प्रोसेस से मैं क्या करता हूं कि आपने जितने भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए, हर 22 टीम में मुझे दिखेगा कि सपोज वेंकटेश अय्यर है कोलकाता नाइट राइडर्स का, मेरे हर टीम में कैप्टन मेरे को 3 बार, आपकी 11 टीम में से मुझे वो 4 टीम में कैप्टन दे रहा है, और दूसरा कोई रोहित शर्मा के कोई है, वो मुझे 5 दे रहा है वाइस कैप्टन. ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बना के आई सी दैट हाईएस्ट बाय 22 टीम्स में से हाईएस्ट मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रेकमेंड कर रहा है, सिस्टम. सो मैं उसको कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाऊं, वो मेरे ऊपर, एज अ यूजर इट्स माय डिसीजन. बट एट द सेम टाइम कि मैंने वो चीज देखता था कि सिस्टम जितनी बार भी कैप्टन वाइस कैप्टन जो हायर नंबर ऑफ परसेंटेज या रिकमेंडेशन देता है, वो ऑन अ गिवन डे आउट ऑफ 10 9 टाइम्स चलता ही चलता है. I have done all those back testing in the other matches, and then I applied those on IPL. So I was not joining the leagues, but I was spending time and only creating teams for this process, to come up with a process. So I never joined the team for T10 T20 and so on, and applied those logic, and in all those logic I went back and did back testing, and in that back testing I applied those all those logic in IPL. So wonderful. So आप मुझे बताइए, आप ज्यादा क्या खेलते हैं? ग्रैंड लीग खेलते हैं, मिनी लीग्स खेलते हैं आप? देखो, सबसे पहले तो लोगों ने मेरे जैसे जितने भी लोग होंगे, और आपके यूजर्स के भी जितने लोग होंगे, वो हर किसी ने कम से कम एक बार तो किसी ना किसी को, टेलीग्राम यूजर को 1000 रुपए या 500 रुपए टीम देने के लिए दिया ही होगा. उसमें से मैं भी हूँ. हर कोई रहता है जब स्टार्ट करता है, तो सबको ऐसा होता है कि क्या करे, कैसे करे. तो वो अगर उसको नहीं आता है, तो यू गो विद समवन कि उसको पता है अच्छा इसको आ सकता है, तो we'll pay that guy 1,000 rupees. So when I pay you 1,000 rupees, you won't give me 11 Grand League teams or mini GL and so on. You will give me only one team. So in the earlier years, I only played small leagues because of these reasons. उसके बाद when I, मेरे को तो जब आपका सबसे पहले आप अगर देखोगे टॉप, अगर यूजर्स में, अगर डाउनलोड हिस्ट्री में जाके देखोगे, तो I would be the first 50 or 100 user जब आपकी मैंने ऐप डाउनलोड की थी. And I reached out to one of your product manager at that time, and I had a lot of discussion and debate and those time, because one of your client is, who is, I don't want to name the company, but one of your good client is a very good friend of mine who is running a fantasy app. So उससे मुझे काफी सब पता चला कि वो कैसे वर्क करता है फैंटेसी सिस्टम एंड सो ऑन. सो उसके बाद आई केम अप विद दिस ऐप. तो आपके ऐप से मैंने, जब से आपकी ऐप डाली तब से ही मैंने मिनी जीएल और जीएल मैंने खेलना स्टार्ट किया है. उसके पहले तो मैं खेलता ही नहीं था, क्योंकि फॉर आप, मेरे को एक टीम बनाने नहीं आती है क्रिकेट में. आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग टू क्रिकेट. मेरे को अगर एक टीम बनाने नहीं आती तो मैं 20 टीम्स कैसे बनाऊंगा? तो मेरे लिए 20 टीम्स बनाने के लिए मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट आपकी ऐप देती है. तो हाँ, तो वहां से आपकी मिनी जीएल और जीएल से मैंने स्टार्ट किया आपकी स्पेसिफिक ऐप से. वहां पे आप और क्या क्या टूल्स यूज करते हैं आज की डेट पे अपने लाइनअप्स बनाने के लिए, टीम्स बनाने के लिए? See, I
I won't say I'm using a tool, but I'm using some very good influencer who are, I would say a very uh, profound players who are playing for longest time. Specific Telegram के 2-3 influencers है. I'll 2-3 influencer ही है, उससे ज्यादा नहीं है, but वो they come up with a very good knowledge of team. So मैं वहां पे क्या करता हूँ कि मैं उनकी टीम कॉपी नहीं करता हूँ. उनकी टीम जब वो लोग डालते एक आधे घंटे पहले, उसमें जो सबसे क्या बोलते हैं लोएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन होता है, मैं वो प्लेयर को सबसे पहले अपने टीम में लॉक करता हूँ. क्योंकि मेरे को पता है कि हमेशा ये प्लेयर जो इवन दो आई डू अ क्रॉस चेक, पहले मैं आपकी 11 टीम क्रिएट करता हूँ और वो 100% मैं आपको बोलूंगा, आपके जो ये इन्फ्लुएंसर है who comes up with an something player who is a less percentage selected player, ठीक है, और वो आपकी मैं 11 टीम जब क्रिएट करता हूँ तो ये दोनों जो कॉमन प्लेयर जो है ना, वो हमेशा आपकी 11 टीम में भी आते हैं. 11 टीम में से कोई 1 2 3 4 टीम में आएंगे और इसके टीम में भी आते हैं, और वो प्लेयर परफॉर्म 10 ऑफ द 10 टाइम्स करता है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, चलो ठीक है, चेन्नई की मैच देख लो. चेन्नई की फाइनल की या सेमीफाइनल की कोई मैच थी जिसमें रॉबिन उत्तपा ने कुछ 50-60 के इतने कुछ मारे थे, और उस दिन उसने वो इन्फ्लुएंसर ने भी रॉबिन उत्तपा को लिया था और आपके ऐप ने भी रॉबिन उत्तपा दिया था. अब रॉबिन उत्तपा को आप जाके कितना भी स्टैट्स लगा लो, कितना भी आप पीछे जाके दो, उस रिकॉर्ड्स कुछ इतने खास नहीं है. ही वाज प्लेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम 2021 में फॉर दिस फ्रेंचाइज एंड सो ऑन. तो अब ये जो इन्फ्लुएंसर है उसको पूरा मिमिक कर रहा है आपकी कंपनी, ठीक है, और आपके टूल ये पूरी मिमिक कर रही है इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेलिजेंस. आई एम जस्ट सेइंग कि वो अपने इंटेलिजेंस से जो भी यूज करता है, एंड यू आर आल्सो गिविंग मी द सेम नंबर ऑफ थिंग्स, बट डिफरेंस इज वो अगर आपके दो या तीन प्लेयर या 2 या 3 4 अगर टीम्स में आ रहा होगा तो मैं उसको लॉक नहीं करूंगा, बट मेरे को वहां जो जैसे दिख जाता है तो मैं वो 3 प्लेयर को लॉक कर देता हूँ. तो मुझे पता है ये मेरे 11 के 11 टीम में तो चलने ही वाला. तो आई keep in all 11 teams and then I'll create teams and I'll see the combinations. Okay. And in those combinations I'll use this process के मेरे को किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना and so on. आपको परफेक्ट लाइनअप का सबसे अच्छा फीचर क्या लगता है, और इन केस यू हैव एनी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट? यस, इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए तो मेरी जब भी आपके साथ आपके कोई टीम के किसी के साथ बात होती है तो मेरा डिबेट ही हमेशा डिबेट मोड पे ही चले जाता हूँ मैं, क्योंकि डिस्कशन, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट फील्ड एंड नंबर्स इन डेटा इज व्हाट आई लव एंड आई प्ले इट एवरी डे इन डे आउट. सो जस्ट अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले ही मैं मेरा बास्केटबॉल का होता है, सो आई वाज जस्ट रनिंग द पाइपलाइंस एंड रनिंग फ्यू ऑफ द मॉडल्स. सो my best feature, because of this, my best feature is for perfect lineup is I would say creating winning teams. There is a difference between teams and winning teams. Creating winning teams in less than 1 minute when it comes to 11 teams and so on, whatever number of teams which you want to create as a user. Second is the captain vice captain recommendations, which work 9 of the 10 times when you use those tools perfectly and so on. And third is the information which you get कि ये pitch में पिछले कितने run हुए and all the prior basically pitch report and the stats. Okay. And the stats reports also, I would say, because stats report ko bhi find out करना it's very difficult. So what is your suggestions on how can we improve the app, or what is that can be built that would help you improve your game? Yeah. So see, what I would suggest, I had a conversation around this, a very good if you guys would have implemented na, definitely इस बार सिर्फ 1 करोड़ जीता है ना किसी ने, तो वो कम से कम इस बार कम से कम 2-3 प्लेयर तो निकाल ही लेते 1 करोड़. सो प्रोफेशनल लीग्स
there is a difference between India में professional leagues and non-professional leagues. A professional leagues, I would say all those leagues which are, you know, coming under ICC events or IPL events, IPL के, तो all these are professional leagues. So whenever there is an professional high event league, just before the match or on the pitch report or the what our captains are saying, there is a lot of information given out there. ठीक है? So for example, आई वुड से भुवनेश्वर कुमार की फर्स्ट मैच थी और समथिंग, और वो भुवनेश्वर कुमार ने टॉस पे बोला था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, दुबई की अभी मैच थी आईपीएल में, सो बोला था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर लाइक मी आल्सो टू कम बैक फ्रॉम यू नो क्वारंटाइन एंड स्टार्ट बॉलिंग अगेन. आई नो इट्स नॉट easy for me to get into the groove, but it will take 1 or 2 matches. Now this is an information where he is not confident as a player that he will be performing on that day, and to support that, pitch report में, pitch stat में जो वहाँ के प्रोफेशनल जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं वो बोलते हैं कि देर इस फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिल सकती आज, या स्पिनर को मदद नहीं मिल सकती है. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन को जो मिमिक करोगे ना अगर आप, वो भी मैं वही बोल रहा हूँ जैसे कि कैप्टन पिच रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट if the individual players are you know commenting about anything just before the match. If you'll go, मैं आज क्रिक इन्फो या क्रिक बस में मैं जाके देखता हूँ कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स पहले कोई भी एक प्लेयर वो बताता है अपने बारे में और मैच के बारे में, और वो बोलता है ये पिच क्या है. एक इंडिविजुअल भी एक कैप्टन बोलता है और एक बॉलर भी बोलता है और बैट्समैन भी बोलता है. देयर इज अ डिफरेंस आउट देयर. सो इफ यू कैन मिमिक दैट इंफॉर्मेशन in your generation of teams, even if you can't, what you can do is while creating the team, you just give the pop-up that this is what Virat Kohli is saying, this is what the players are saying. Okay. And then user can create teams there and there. But मैं अगर आपकी वहाँ डेटा साइंटिस्ट के टीम में होता तो मैं तो ये पूरा एनएलपी टेक्निक से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मिमिक करके आपके मॉडल में डाल के teams banata, because that is how teams are created in US fantasy platforms. So I have seen and I have used those platforms, so I know okay, this is the information which is very important. I know that's a great point you raised, that in fact it will help us incorporate the latest dialogue that is going on just before the match, around the match, into helping people create more informed lineups. That's a wonderful point. So because what happens is 90% of the time, those who are playing for the first time, there are 3-4 types of players: beginner, advanced, intermediate. अगर जो beginner होएगा ना वो IPL में ही खेलेगा, जो advanced होएगा ना वो IPL भी खेलेगा और कोई इधर उधर की लीग्स भी खेलेगा, और जो इंटरमीडिएट लेवल पे होएगा ना वो IPL खेलेगा ही नहीं कभी. वो सिर्फ अपने लीग्स को सेट करके रखा है, जैसे कि T10 है और जो डोमेस्टिक लीग्स है वो कभी आईपीएल खेलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कंपटीशन बहुत है, उसका दैट इज नॉट हिज फोर्टे. सो ये वाले को भूल जाओ. जो इंटरमीडिएट लेवल वाले जो प्लेयर्स है, यू डोंट टारगेट देम, बिकॉज they already have a lot of information and they are very much strong on the basics. They are playing from past 10 years and so on. They know how this games work, so they don't want to want some kind of I would say एक एक्सटर्नल फोर्स जहाँ पे दे वुड उनका प्रोसेस बिगड़ जाए. तो बिगिनर और एडवांस के बीच वाले जो प्लेयर्स है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके टेलीग्राम्स पे देखते हैं कि टॉस के क्या अपडेट है. फिर जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, जैसे आई वुड से क्रिक इन्फॉर्मर, वो एक उसके 3.5 lakhs के इतने कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर है कि उससे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है टेलीग्राम पे. So he is a very professional fantasy player where he gives suggestions and so on. वो लिखता है कि टॉस रिपोर्ट, सीधी टॉस रिपोर्ट ही वो कॉपी पेस्ट करता है, और फिर वो बोलता है कि based on this toss report I am creating this team. But before the toss report he had a different mindset and approach for that team. वो प्रीव्यू डालते हैं सुबह को, और वहां पे वो लोग एक पिच रिपोर्ट बताते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है. बट जस्ट बिफोर द मैच, टॉस पे, पिच रिपोर्ट पे, कैप्टन्स में प्लेयर अगर ये बोलते हैं तो दे चेंज देयर डिसीजन, एंड 90% ऑफ द टाइम इट वर्क्स, बिकॉज वहां पे खेल तो प्लेयर है और ये प्रोफेशनल लीग्स है. प्रोफेशनल लीग्स में
no one would do all this जुगाड़ वहां पे कि इसने बोल दिया कि नहीं ये तो स्लो पिच और वहां पे फास्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है. So Yeah. I go to Telegram, and many of the beginners and advanced users go to Telegram for this information. So if you can So there's inculcate. a there's a constant alignment happening between what's happening currently right before the match in terms of toss report, in terms of what players are saying, captains are saying, or what how the pitch is appearing out to be to Correct, the correct. bowler or the batsman. That makes a whole lot of difference in creating teams. So that is a wonderful point you spoke about, Nitin Jetwani, who comes from a data science background. जो आप इतनी डिटेल में हमको बहुत सारी बातें बता रहे हैं. It will be totally worthwhile for us to hear from you on what is your number one advice for somebody who's looking out to maximize his winning and fare out as a better player in fantasy cricket. Your So number one advice. Yes, first number one advice would be never go out for someone directly. I would say never pay to someone to create teams. Prime का जो एक जो भी पहली बार जो खेलता है वो सबको एक ही डेफिनेशन होती है प्राइम यूजर के प्राइम चैनल कौन से सब. डोंट गो आउट फॉर दिस. यू कैन बिकॉज वो जो टीम बना रहे हैं वो अपने इंट्यूशन से बना रहे हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिनिमम ऑफ 30-40 रुपीज में परफेक्ट लाइनअप देती है, एंड यू कैन क्रिएट इट वेरी इजीली, एंड यू कैन डू योर रिसर्च भी क्या. अगर आप देयर इज नो व्हेन इट कम्स टू टर्म ऑफ रिसर्च, लोगों के दिमाग में ये होता है कि रिसर्च यानी मेरे को 10-15 मिनट बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि परफेक्ट लाइनअप में कि कौन पिछले टॉस रिपोर्ट क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, और समथिंग के पिछले 5 मैच में क्या हुआ है, 10 मैच में. ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके वो ही आपको एक टीम देती है विद इन अ लेस 1 मिनट में. अगर आपको मैं अगर 11 टीम दे देता हूं तो आपको इतना तो पता चल सकता है कि ये 11 टीम में से आपको क्या लगता है कि इसमें से मैं ये चेंज, चलो आप मान लो आप अपना ह्यूमन इंट्यूशन ला लो, आप 1 या 2 प्लेयर को चेंज कर दो इफ यू डोंट वांट दोस प्लेयर्स. सो माय नंबर वन एडवाइस इज ऑलवेज फॉलो योर गट, बट डोंट फॉलो द क्राउड. ठीक है, बिकॉज वंस यू विल फॉलो द crowd, you will be on the same lines of people falling under the prey of selling teams and so on online. So yes, I would say automation is the future, or creating automated teams is the future, but at the same time inculcate your gut over there, introduce your gut over there के अच्छा मुझे लगता है ये 11 टीम में से मेरे को ये प्लेयर को हटाना है, कोई एक तो हटा दो, कोई एक में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन को सिर्फ चेंज करना है, बट डोंट चेंज द एंटायर 11 टीम. वो पूरी मेहनत जो वो कर रहे हैं, वो आपको एक फीचर में दे रहे हैं, आप मशीन के ऑपोजिट जा रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं मशीन तू गलत है और मैं अपनी बनाऊंगा टीम. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 11 के 11 प्लेयर्स को चेंज करो, मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि गट अगर आपको यूज करना ही है कि यू थिंक नहीं ये प्लेयर तो नहीं, ये कैसे टीम में ये प्लेयर कैसे आ गया, तो यू कैन चेंज दैट 1 or 2 प्लेयर्स, बट डोंट चेंज द एंटायर 11 प्लेयर्स, बिकॉज दैट इज द एंटायर कॉम्बिनेशन विच whatever the data has been input in that particular app, and that app is giving you that result. So I would say follow your gut, but don't follow the crowd. Yeah. Thank you so much. That's a wonderful advice. And in fact, everybody who gets a little pro at fantasy cricket, they end up saying this only, and like they say, the fundamentals remain. The classics. These are the classics of fantasy cricket. So thank you, Nitin Jetwani ji, talking to us. It was wonderful listening to you. In fact, the time fell short. Otherwise, hum to sunte hi jate. I hope that people would enjoy listening to you as well. And I look forward to many more conversations with you. Thank you Sure. so much for your time. Thank you so much. Yeah. Bye-bye. Bye. 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 Bye.